Hello my champions, welcome to BIOGURU. Today we will discuss about fertilization and development. Fertilization, fusion of male and female gamete and then development. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इम्प्लांटेशन कैसे होगा, बट इम्प्लांटेशन से पहले हमें डिस्कस करना है fertilization and development. So during copulation or coitus, semen is ejaculated through the penis into the vagina. It is also called insemination. Spermatozoa acquire their ability to fertile the ovum only after they undergo some changes in the female genital tract. अगर किसी मेल से डायरेक्टली स्पर्म्स को लिया जाए एंड देन ओवा को फर्टिलाइज कराया जाए, देन फर्टिलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एक प्रोसेस कैपेसिटेशन वहां पर नहीं हो पाती. कैपेसिटेशन के लिए स्पर्म्स को फीमेल ट्रैक में कुछ टाइम के लिए रहना होगा. So these changes are called capacitation. तो capacitation क्या था कि the changes in the properties of zona pellucida constitute the zona reaction. And sperm capacitation जिसकी हम बात कर रहे थे अभी capacitation की, sperm capacitation refers to the physiological changes that the spermatozoa must undergo in order to penetrate and fertilize an egg. Capacitation से जो sperms है वो activate होते हैं and then they are able to fertilize the egg or ovum or secondary oocyte. Changes take place in the membrane over the acrosome and enable release the lysosomal enzyme. Lysosomal enzyme lyse करेंगे. This is called acrosomal or acrosome reaction. The acrosomal vesicle at the tip of the head fuses with the plasma membrane of the egg, releasing enzymes from the tip of the sperms. स्पर्म का जो हेड है इसके ऊपर एक पार्ट है, इट इज कॉल्ड एक्रोसोम. एक्रोसोम में बहुत सारे लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं. जैसे ही वो कांटेक्ट करते हैं एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, वो उन लाइसोसोमल एंजाइम्स को रिलीज करेंगे. आफ्टर रिलीजिंग दे डाइजेस्ट द मेम्ब्रेन एंड दे आर एबल टू पेनिट्रेट द सेकेंडरी oocyte और ओवम. इट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन की साइट कहां पर है? फर्टिलाइजेशन की जो साइट है it is ampullary isthmic junction. The motile sperm swim rapidly, pass through the cervix, enter the uterus and finally reach ampullary isthmic junction of the fallopian tube because it is site of the fertilization. The ovum released by the ovary is also transported to the fallopian tube. Then where fertilization takes place? तो fertilization कहां पर होगा? ampullary isthmic junction पर. ओवरी से जो ओवा है सेकेंडरी oocyte है वो भी कहाँ जाएगा? एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पर. एंड देन आफ्टर कोइटस और इंसेमिनेशन स्पर्म्स भी कहाँ पहुंचेंगे? टुवर्ड्स द एम्पुलरी स्टमक जंक्शन. इट इज कंसेप्शन इन द ह्यूमन. द oocyte cumulus complex of the female is surrounded by zona pellucida, corona radiata and cumulus layer. तो क्या करेंगे? जो oocyte है, सेकेंडरी oocyte है, उसे कवर अप करता है फर्स्ट प्राइमरी एग मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड जोना पेलुसिडा, देन सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन कोरोना रेडिएटा. व्हेन अ मोटाइल स्पर्म रीचेस द ओवम इट मेक्स इट्स वे थ्रू कोरोना रेडिएटा एंड जोना पेलुसिडा. इन दोनों ही एग मेम्ब्रेन्स को पेनिट्रेट करने के बाद ही स्पर्म एग तक पहुंच पाता है. सो in this process, the enzyme hyaluronidase released by the acrosome of a sperm helps in dissolving the hyaluronic acid in the ground substance of the follicle cells. जो ऊपर follicle cells थे उनको डाइजेस्ट करने के लिए, then corona radiata को डाइजेस्ट करने के लिए भी hyaluronidase enzyme जरूरी है. It also helps in penetration या penetrating through corona radiata. And the enzyme acrosin, ध्यान से सुनेंगे acrosin. The enzyme acrosin is released from the acrosome as an effect of the acrosome reaction. It is also called acrosomal reaction. It dissolves or digests the zona pellucida, primary egg membrane, to facilitate penetration of the sperm. And through several, देखिए अब क्या था? Through several processes, कि बहुत सारी processes से गुजरने के बाद, उनको पास करने के बाद, the several sperms penetrate through the zona pellucida. उसके बाद भी about 100 to 200 sperms secondary oocyte तक पहुंच जाते हैं. And
Zona perdita into the periuterine space, only one sperm enters the ovum. अब इतने स्पर्म्स पहुंचने के बाद भी केवल एक ही स्पर्म होता है जो एग के अंदर एंटर करेगा. इट इज कॉल्ड मोनोस्पर्मी. अगर एक से ज्यादा स्पर्म्स एग के अंदर एंटर कर जाएंगे, दिस कंडीशन इज कॉल्ड पॉलीस्पर्मिया. सो the entry of sperm induces the completion of the meiosis second of the secondary oocyte, because meiosis second कब complete होगी? जब sperm की entry secondary oocyte में होती है. जब sperm secondary oocyte को क्या करेगा? secondary oocyte को penetrate करेगा, उसे fertilize करेगा, then वहां formation होता है ovum का. और जब दोनों nucleus fuse हो जाते हैं, then there is formation of zygote. The second meiotic division is also unequal and results in the formation of a second polar body and an ovum or oocyte. इसके बाद जब दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होंगे and the fusion of gametes is called syngamy or amphimixis. The nuclear union दोनों न्यूक्लियस जब फ्यूज होंगे, it is called nuclear union. Results in the formation of synkaryon. Synkaryon जब दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो गए, it is zygotic nucleus. Then there is formation of zygote. Corona radiata disappears after fertilization. और fertilization के बाद जो corona radiata है वो disappear हो जाएगी. Then the entry of sperm causes release of calcium, which blocks the entry of other sperm. अब जो कैल्शियम है वो कुछ कैस्केड्स को स्टार्ट करेगा, प्रोसेस होंगी एंड अदर स्पर्म्स की एंट्री को वो इनहिबिट करेगा. A parallel reaction is the zonal reaction. And one note, one has to remember that the sex of the baby has been decided at the time of fertilization itself. ये आप लोग जानते हैं कैसे? So let us see how. देखिए, आप जानते हो जो फीमेल है, फीमेल्स हमेशा क्या बनाएंगे? फीमेल्स फॉर्म करते हैं X टाइप ऑफ एग्स और सेकेंडरी oocyte. मेल्स प्रोड्यूस करते हैं X and Y टाइप ऑफ स्पर्म्स, 50% X टाइप ऑफ स्पर्म्स एंड 50% Y टाइप ऑफ स्पर्म. आप उन्हें कह सकते हैं कि देखिए 23 क्रोमोसोम है, 22 आर ऑटोसोम प्लस X and 22 ऑटोसोम प्लस Y. After fusion of the male and female gametes, the zygote would carry either XX or XY. लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मतलब मेल और फीमेल. तो मेल और फीमेल के डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ? मेल. क्यों? क्योंकि मेल के पास एक्स और वाई दो टाइप के स्पर्म्स हैं, दो टाइप के गैमीट्स हैं, बट फीमेल के पास केवल एक ही गैमीट है या एक ही टाइप का गैमीट है. इट इज कॉल्ड एक्स टाइप. The zygote carrying XX would develop into a female child, and that with XY would form a male child. So, the sex of a child depends on the male parent. It is heterogametic parent. Heterogametic क्यों है? दो टाइप के गैमीट है, X and Y. Now, releasing of semen into vagina during coitus is spermiation, spermiogenesis, insemination, or both 1 and 2. Yes, it is insemination. In humans, female fertilization takes place in ampulla, isthmus, ampullary isthmus junction or uterus. Yes, it is ampullary isthmus junction. फिर आता है क्लीवेज. क्लीवेज का मतलब क्या है? जो जाइगोट है, जाइगोट में डिवीजन होगा. अभी जाइगोट एक सिंगल सेल है, फिर 2, 4, 8, 16, 32 सेल्स में डिवाइड होंगे. इट इज कॉल्ड क्लीवेज. बट एक सिंपल सा फैक्ट है कि क्लीवेज के टाइम पर जाइगोट का साइज नहीं बढ़ता. इज दिस क्लियर? ओके. So, human embryology is the study of human development during the first 8th week after fertilization. Because 8th week तक वो क्या है? Embryo है. That's why study को हमने क्या बोला? Human embryology. From the beginning of the 9th week, और जैसे ही 9th week start हुआ, the developing young one is called fetus. अब उसे हम fetus कहते हैं, ना कि embryo. Now the type of cleavage is holoblastic. Holoblastic मतलब complete cleavage. Because of the microlethal condition of egg and intermediate. देखिए microlethal का मतलब क्या है? Very little amount of yolk and intermediate amount of yolk. But human egg is a lethal egg. उसमें yolk बिल्कुल नहीं होता. So यहाँ पर भी cleavage कैसा होगा? Complete cleavage होगा. That's why holoblastic. The first division or cleavage occurs at about
36 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, कि फर्टिलाइजेशन के 36 आवर्स के बाद क्लीवेज स्टार्ट हुआ है। एंड द ब्लास्टोमियर्स आर इक्वल इन साइज, इक्वल है, होलोब्लास्टिक है, इक्वल डिवीजन है। सो नाउ क्लीवेज इन ह्यूमन जाइगोट इज होलोब्लास्टिक, रेडियल एंड इंटरमीडिएट, होलोब्लास्टिक स्पाइरल एंड इंटरमीडिएट, होलोब्लास्टिक रेडियल एंड डिटर्मिनेट, और होलोब्लास्टिक स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट। It is holoblastic, radial and indeterminate. Now next is morula. Zygote अब convert होता है morula में. Then this stage is called morula. When the number of blastomeres क्या है? जो cleavage के टाइम पर जो division हो रहा है, जो new cells बन रहे हैं. So when the number of blastomere is 16 to 32, the solid ball of cells is called morula. इसको morula हमने क्यों बोला? Because it looks like a mulberry. Mulberry, शहतूत. Okay. So at this stage, the cells start to bind firmly together, and this process is called compaction. Compaction क्यों है? Because cells आपस में compact होके bind हो गए. And the cells of the morula become bound tightly together, and the outer surface of blastomere flatten against each other. So now अलग अलग उसके स्टेजेस हैं, अलग अलग सेल्स के टाइप हैं, आउटर लेयर, इनर सेल मास, डिस्कस करेंगे उनको आगे. So this tightly packed arrangement is stabilized by tight junctions that forms between the outer cells of the morula. Outer cells of morula, अब वहाँ tight junctions है. Tight junctions में क्या होता है? Tight junctions में चीजों का, tight junctions में क्या है? किसी भी substance या material का transfer नहीं होता. The cells within the sphere फॉर्म गैप जंक्शंस, और गैप जंक्शंस वो होते हैं जिससे मटेरियल का ट्रांसफर होता है, विच हेल्प इन बेटर पैसेज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन देम. एंड नाउ द टाइनी एम्ब्रियो इज स्टिल सराउंडेड बाय द जोना पेडिस्टुडा, और मरूला बनने के बाद भी उसमें जोना पेडिस्टुडा लेयर प्रेजेंट रहेगी. एट द कंप्लीशन ऑफ क्लीवेज और ब्लास्टोलेशन, द एम्ब्रियो हैज अ सेंट्रल कैविटी कॉल्ड ब्लास्टोसील. Blastula, and the cavity is called blastocele. The process of formation of blastocele is called cavitation, because cavity का formation है. और जो outermost layer है, यहाँ पे जो outer layer है, that is called trophoblast. Trophoblast placenta and extra embryonic membranes का formation करता है. And inner cell mass ICM और inner cell mass form करेगा embryo को. So now the embryo has a superficial flat cell layer and an inner cell mass. Inner cell mass अंदर है, और जो बाहर covering है, it is called trophoblast.